Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, 8 shifts of IBPS clerk are now over. And after giving examination, it is quite obvious question that haunts our mind whether I will clear this exam, whether I will get chance to appear in mains, whether I should prepare for mains or not. And this question is full of suspense that is going to happen in future. Now, if we look at the level of exam, if we look at the number of attempts given by various candidates in the comment of our various videos, as well as the poll that we are conducting at our Telegram channel, a very difficult picture is being depicted. And to understand this picture, we have to understand two basic aspects of competition. One basic aspect is accuracy. The candidates, those are accurate. The candidates, those have attempted their answers with utmost accuracy. They are always front runner. This is postulate number one that we always have to keep in mind. And that's why every time I advise to focus on accuracy. Because what happens, say a person is able to attempt more questions. He may be happy that I have attempted more questions. But out of more questions, if large number of questions are wrong, answers of large number of questions are wrong, then the negative marks will push down this candidate below a candidate who has attempted less questions but with full accuracy. That means the number of attempts is not the only parameter to assess the final score. The final score is dependent on number of correct answers and number of wrong answers. And the culmination of both leads to your final score along with normalization. So the second major factor that determines your aggregate score is normalization. So if a person has done the exam with utmost accuracy and the normalization is also in his or her favor, he may outplace the competitor. So in a competitive examination, there is no predetermined cutoff like academic exam. In academic exam, if I score say 40%, 50%, depending upon whatever is the passing marks fixed by the university, I get the degree. But in competition, it is a dynamic score. Why it is dynamic score? Because this is dependent on number of vacancies. This is dependent on number of vacancies in your category. This is dependent on the state from which you have applied. And this entire calculation is dependent on an uncertain event, how your competitive candidates have fared. If most people have fared better than you, you will be pushed down. But most candidates have attempted lesser than you are ahead of them. So there are a lot of dynamic things that happens in deciding whether you are in or you are out. And that's why I say the cutoff prediction is almost impossible. Cutoff prediction has no scientific model, and that's why we have stopped doing any cutoff prediction for last 2 years. I am watching all these exams since 2012, and the most of the selections through IBPS new pattern has happened before my eyes. Since 2012 I am tracking these exams, and every year we get some new surprise when result comes. Many candidates, those have
thought that they will not clear, they clear the examination. And many candidates, those are highly confident that they will definitely clear, they are left behind. And that gives us a sense that we are not capable of predicting our result. What is in our hands? In our hands is the preparation of next leg. I am not sure that I will clear the exam or not, because I have done my work, I have prepared and appeared in pre-examination. That is what I have done, this is my act. But whether I will clear, whether I will not clear is not in my hands. That is dependent on various dynamic factors that is playing simultaneously. So what should I do? Should I lose the time? Should I wait for the result to come? That may come 10 to 15 days before my main examination. Whether at that time I will have time to prepare for mains? No. So the prudence says I must start preparing for main examination soon after I have appeared in pre-examination. Because without clearing main, I will not get the job. And since I am competing, so I am not competing for just sitting for pre. I am competing to appear in mains. And that's why my simple advice is prepare for mains. If you ask me, sir, my attempts are this much, should I prepare for main? My answer is very simple and to the point, prepare for main. Because no person is capable of predicting whether you will be getting a chance to appear in main or not. It is not possible at all. That is what my experience says. Some people may be giving predictions. They are wise people. Their intention is good. But that is again a guesswork. That guesswork may ultimately prove to be correct, and they may fail the cutoff by a large margin also. So there is no hard and fast rule that this cutoff will prevail. And that's why by getting worried by seeing the cutoff, by becoming happy by seeing the cutoff, I think it is not worth it. The worth it is my own act, my preparation, because ultimately one outcome will happen, either I will clear or I will not clear. If I clear, I have prepared well, I stand good chance in main examination now. If I have not cleared, heavens are not going to fall. I am preparing. That knowledge accumulation will help me in any future examination. There are more exams lined up. So if I am preparing for a competitive examination, I should continue to study. I should not break my study. And this continuation of study can fetch me one or another job. And that is my analysis, that is my review. I don't make any prediction for cutoff, but my simple advice is kindly prepare for mains. And don't bother what others are saying. Don't get panicked by seeing the performance of others. You are unique, your result will be unique. Believe in yourself, prepare for mains, that is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। IBPS क्लर्क के 8 शिफ्ट कंप्लीट हो गए और 8 के 8 शिफ्ट में यदि हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत ही वैलिड कमेंट्स हैं। किसी का बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स हो गए हैं, किसी के कम हो गए हैं, किसी की एक्यूरेसी ठीक है, किसी की कहना है कि कुछ क्वेश्चन गलत थे, किसी का कहना है कि मेरी शिफ्ट कठिन थी। ये सब बातें अपनी जगह हैं। मेरा मानना ये है कि जो 2012 से मैं इन एग्ज़ाम्स को ट्रैक कर रहा हूँ और हर साल एक नई चीज़ निकल के आती है। किसी भी साल पैटर्न पिछले साल के पैटर्न पे फिट बैठता ही नहीं है। पिछले कट ऑफ्स किसी भी तरीके से कुछ भी बताते ही नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है,
सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखी एक्यूरेसी। जिन लोगों ने एक्यूरेटली अटेम्प्ट किए वो कम अटेम्प्ट करके भी कामयाबी पाने में सफल हुए, ये मैंने पाया पिछले अपने 10 साल के अनुभव में। दूसरी चीज़ जो प्ले करी वो की नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में हो गया, आपके अगेंस्ट हो गया, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो अब आपने क्या किया, आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें एक्यूरेटली आपने काम किया। किसी ने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया मगर बहुत ज़्यादा गलत भी कर दिया, तो बहुत अधिक अटैम्प्ट करके भी वो पिछड़ गया। किसी ने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए मगर सारे ठीक किए, कोई भी नेगेटिव स्कोर उसको नहीं मिला, फिर भी वो आगे निकल गया। क्योंकि पूरे कंपटीशन में कई डायनेमिक्स एक साथ काम कर रही हैं। पहला, वैकेंसी कितनी है, मेरी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, मेरे स्टेट के अंदर क्या स्थिति है, मेरे साथ जो कंपटीटर बैठे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है। क्योंकि ये कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है जहां पहले से प्री डिटर्मिन्ड एक कट ऑफ है या पासिंग मार्क्स है कि इतने नंबर आ गए तो डिग्री मिल ही जाएगी, इतने नहीं आए तो डिग्री नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। क्योंकि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा वो डायनेमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी से हैं, किस स्टेट से हैं, उस कैटेगरी के लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है मेरे स्टेट में, क्या मुझसे बेहतर परफॉर्म किया है, मुझसे वर्स परफॉर्म किया, ये मुझे पता ही नहीं है। तो एस्टिमेशन किस बेसिस पे? सिर्फ हम गैस कर सकते हैं और गैस के आधार पर हम हिम्मत हार के बैठ जाएं या हम बहुत खुश हो जाएं, मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर मैं कंपटीशन में बैठा हूँ तो मैं कंपटीशन जीतने के लिए ही बैठा हूँ। मैंने अपना काम किया, मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया, अब मैं आश्वस्त हूँ कि मैं मेन में भी बैठूंगा। ये मेरे को ऊपर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपने पे विश्वास होना चाहिए। मैं एक भी दिन जाया नहीं करूँगा, मैं मेन की तैयारी करूँगा, ये मेरा दूसरा कदम होना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, मैंने तो अपना काम कर दिया ना, मैंने एग्ज़ाम दे दिया। अब एग्ज़ाम देने के बाद दो ही विकल्प हैं, या तो मैं पास होऊंगा या मैं पास नहीं होऊंगा। अब ये किसी को नहीं पता कि मैं पास होऊंगा, किसी को नहीं पता कि मैं पास नहीं होऊंगा। ये एक मिस्ट्री है। जब रिजल्ट आएगा उसी दिन ये पता लगेगा। तो क्या मैं उसकी सोच के अंदर वक्त जाया करता रहूं, या मैं अपना फेज 2 की या मेन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दूं? पास हो गया तो ये तैयारी मेरे काम आएगी। पास नहीं भी हुआ तो ये व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि इस कंपटीशन में नहीं काम आई तो किसी और कंपटीशन में काम आएगी। मेरी तो नॉलेज बढ़ चुकी है और ये नॉलेज मेरे सारे एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है। सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे तो मैं बैठा ही नहीं हूँ और कोई भी कैंडिडेट बैठ ही नहीं सकता। हर साल ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट कई एग्ज़ाम्स पार कर जाता है और कई कैंडिडेट एक भी एग्ज़ाम नहीं पार कर पाता। कोई एक एग्ज़ाम क्लियर करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, कोई 4 करता है, कोई 5 करता है, कोई 6 कर लेता है। तो इसलिए कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बहुत ज्ञानी लोग प्रेडिक्शंस करते हैं कट ऑफ की, वो सब समझदार हैं, मगर कोई साइंटिफिक मॉडल नहीं है ना, तो वो अपने हिसाब से एक गैस वर्क कर रहे हैं। वो गैस सही भी निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है। उनकी इंटेंशन अच्छी है, मगर उस कई बार अच्छी इंटेंशन के होते हुए भी कुछ कैंडिडेट को नुकसान हो जाता है। उनको लगता है यार मेरा तो होगा नहीं, मेरा तो होगा नहीं, वो पिछड़ जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो अपनी तैयारी छोड़ के बैठ जाते हैं और अचानक रिजल्ट आता है, वो पास हो जाते हैं। फिर क्या होगा? क्या जो आपका वक्त निकल गया वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए हमें समय की नज़ाकत को समझना है, हमें अपनी तैयारी करते रहना है। और कोई भी कुछ भी कहे, हमें बहुत ज़्यादा उससे ना तो खुश होना है ना परेशान होना है। हमने अपना काम करना है और इसीलिए इस चैनल पर 2 साल से हम कोई कट ऑफ प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे। जब तक मुझे लगा कि मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन करने में सक्षम हूँ और वो प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक नियर एक्यूरेट निकलती थी, जब तक मुझे लगा कि अभी ऐसे
आंकड़े हैं कि मेरा अनुभव इतना है कि मैं इसमें कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, मैं करता चला गया। और जब मैं लगा कि मेरा कट ऑफ प्रिडिक्शन दूर दूर तक भी सही नहीं निकलेगा, जो सही कट ऑफ आएगा, तो मैंने उसको करना छोड़ दिया, क्योंकि आदमी को अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। और मेरे को जब वो पता लग गई, उस दिन के बाद मैंने कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं की। मगर एक चीज़ मुझे ज़रूर उससे पता लगी कि हर कैंडिडेट के क्लियर करने की संभावना हर साल है, और हर साल ऐसे काफ़ी कैंडिडेट क्लियर करते हैं जो होप छोड़ के बैठे होते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट छूट जाते हैं जिनको पूरी उम्मीद होती है कि मैं तो पास होकर ही रहूँगा। हर साल ऐसा होता है, हर साल। ये चीज़ एक सच्चाई है, यथार्थ है। तो इसलिए जिसको ये लग रहा है मैं नहीं होऊंगा, कुछ नहीं पता आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और जो बहुत ज़्यादा भरोसे में है कि मेरा 100% होगा, उसका होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं भी होगा तो ये भी ज़िंदगी का यथार्थ है, उससे हमें लेसन लेना है, आगे बढ़ना है। मगर हमें निरंतर मेन की तैयारी करनी चाहिए। ये मेरी सलाह है, ये मेरा कंक्लूज़न है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा रिव्यू है। आप अपने पे भरोसा करके पढ़ाई में जुटे रहिए। जो होगा वो भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता है, अच्छा ही होगा। इस उम्मीद के साथ हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, ये मेरी सलाह है। जिनके अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं उनको भी मुबारकबाद, जिनके कम हुए हैं उनकी भी होप अलाइव है, ऐसा मैं मानता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।